Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed, roll number 606, and the topic of my presentation is blockchain security beyond cryptocurrency. These are the course content we are going to cover, starting with the introduction to blockchain. Before starting the introduction, we need to clear some misconception about blockchain. Most people assume that blockchain and cryptocurrency are work interchangeably, but that's not the case. Blockchain is a technology and the cryptocurrency is an application that working on the blockchain. Blockchain technology is supporting various industries like finance, supply chain, manufacture, medicine, healthcare, Web3, NFTs, metaverse, and many more. The government of UAE has planned to enable the blockchain across all the seven emirates in almost every industry by 2030. Even though some companies are conducting blockchain voting system and implementing blockchain in their healthcare system as well. So the use case of blockchain is far more than just cryptocurrency. And that's our topic as well, blockchain technology beyond cryptocurrency. So let's start with the introduction. So blockchain is just like a database which is used to store data. So does blockchain do? The core difference is that how data can be accessed and stored in database and blockchain. The data in blockchain is very difficult to be hacked, changed, or manipulated. It is nearly too impossible to change or manipulate the data in blockchain. What make it more secure? Because the normal database, we have no access to the database. It is centralized, like there is a central authority, like bank, government, or a person who has the power to control the system. And that's not the case in blockchain. It is decentralized system, like there is no central authority that controlling the overall system. So that's make the data more secure. A blockchain is a distributed ledger that duplicate and distribute transaction across all the network of computer participating in the blockchain. So it's not a single system where the transaction is recorded in blockchain. There is a multiple computer, multiple nodes, and when you do a transaction, it make a copy of that transaction and send to every node. So why it is called blockchain? Because as the name show, it is the combination of two words block and chain. The data that is stored in blockchain is in groups which is called block, and each block can hold a certain amount of data. There is a limit of the data. When the limit is exceeded and the block is filled with data, you have to move to the another block. And the current one is chained with the previous one. And this makes the chain of the blocks. That's why it's called blockchain. The difference between normal banking system and blockchain is security that blockchain provide. Blockchain security refer to the best principle and best practices to minimize the risk and avoid the attack from unauthorized person to access the blockchain network and hack the data of the users. There are multiple security criteria you have to fulfill to do the transaction in blockchain. That's why the data in blockchain is highly secure and it is very difficult to tamper or manipulate the data in blockchain. Timeline and history of blockchain. In 2009, Satoshi Nakamoto was a developer who released the Bitcoin white paper. He published the research paper named Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, which is the first ever practical application which is working on the blockchain technology. 2010, the first ever Bitcoin transaction was made, and it is the first ever transaction that is recorded in blockchain. And we can even verify that because once the transaction is made, it is recorded in blockchain for the lifetime. So what the transaction is? On 22 May 2010, there is a developer who bought two pizzas from the famous pizza franchise Papa John's at around 10k bitcoins, which were around $41 at that time. As of today, the value of these 10k bitcoin is 62 crore 91 lakh 61,000 USD. In 2013, the marketplace of Bitcoin is crossed $1 million, $1 billion. In 2014, Ethereum blockchain is funded, and in 2015, Ethereum blockchain was released. Here you can see in detail importance of blockchain. Why there is a need of blockchain? The first reason is that if you want to do a transaction, you need to depend on the central authorities and the third parties like bank. You have to go to the bank
You do a transaction, you have to wait for a several days and then your transaction was actually made. But that's not the case in blockchain. If two-person want to do a transaction with the mutual consensus, they can do easily with their mobile and the internet connection. But the core reason of blockchain is that the security it provides. The former director of FBI, Robert Mueller, said that there are only two type of companies that exist. That that those who will be hacked in future and that those who have been hacked once in their life. He is telling in the perspective of security that no company is risk free from security breaches. These are the number of the known security breaches in February 2024. That's quite a big number, and I think no company wants to be in that number. That's the official report of IT governance. You can see a lot of industries are affected by the security incident, including healthcare, manufacture, telecom, services, and I think every company. So why blockchain? One of the major advantage of blockchain is the level of security it can provide. The data that is stored in blockchain is highly secure and it can be tampered and hacked. Another reason is security. Like I said, if you want to do a transaction, you are dependent on the third party like bank. You have to wait for a several day if you want to do a international transaction. It's around 2 to 5 days to complete the transaction, and blockchain is due in quite minutes. Third is there is no third party interference from financial institutes, which is an advantage. These are some specific advantages of blockchain. First one is highly secure. Like I said before, it is nearly too impossible to change or manipulate the data in blockchain. It is immutable and tamper-proof. Next is decentralized system. There is no central authority which is controlling the whole system like bank, and you don't need the approval of the regular authorities like bank or government to do the transaction. If two-person want to do a transaction with mutual consent, they can easily do. Next is transparency. What does that mean? That you can even verify every transaction that is stored in blockchain. There are two keys, public key and private key. Public key is the key which is accessible to everyone just to verify the transaction that the transaction is correct or not. So this is another advantage of blockchain. Next is immutable record that you can't change or manipulate the data. Next is distributed ledger, like there are multiple copies of the data are made and it is recorded in every computer at the same time. Next is speed. By removing the third parties, you can do the transaction very fast. How blockchain works? So blockchain use three leading technologies. First one is cryptographic keys, which is also called hash keys. Next is a peer-to-peer network containing a shared ledger. Like I said before, there are multiple computers which are participating in blockchain. So this is peer-to-peer networks, and the next is a mean of computing. Working of blockchain. So let's see how blockchain can work. First, blockchain can take the data and enter it into the block. Once the block is filled with the information is run through the encryption algorithm, which create a hexadecimal number, which is impossible to crack, which is called hash. So first of all, you need to understand what is encryption algorithm and how it's work. So for example, you want to send a message hello to the other person and you don't want someone to read it. So what you can do, you can encrypt the message. How you can do it? There are several ways. Let me tell you the simplest way for the sake of understanding. Take the word hello, take the first letter of it H and look at the letter below it. That gives you E. Then the E gives you B and so on and on. The encryption form of hello is become EBIIL, which is a useless word for someone who don't know the which encryption algorithm is applied to this. So this is how it's work. It is the simplest way, but the blockchain is use very complex algorithm, which is impossible to hack. So the hash which is created is entered into the following block header, and the previous block hash is also entered to the same block.
Here you can see the diagram for the better understanding. So what happened if you want to change the data in blockchain? If you want to change the data, you need to change the hash because the data is become the hash after the encryption algorithm. So one block is containing his hash and the previous hash. So you need to change the previous hash as well. And it make the chain of the block which contain all the previous hashes. So you need to change all the hashes to access the data. So it is humanly impossible because what happened if you're going to do that? It takes 10 minutes to change one hash of the block. And if there are 1 crore blocks but are participating in blockchain, so you need 200 years to change all the hashes. So I think no one is going to stay 200 years just to access the data in blockchain. So this is the complete diagram how blockchain works. The transaction is requested and the block is created. Block is sent to the every node. Node is validated that transaction is correct. Block is added to the previous chain and the transaction is complete. Next, we have some real-world applications of blockchain and their use cases. The government can use blockchain by implementing blockchain voting system, allow the creation of secure and transparent voting system, reducing the risk of fraud. As we all know what happened in Pakistan in 2018, there are some allegations from the opposition party that elections aren't conducted fairly, which might be possible because we don't know. And even in recent election, due to some reason, the result of voting are being delayed. These are some reasons we need to shift on blockchain voting system. Next, in healthcare industry, we need to store data of patients in blockchain. In real estate, the legal process is stored in blockchain, and cash app you need to send or transfer money with the help of blockchain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syed Muhammad Hasnan Bukhari. My roll number is 77. My topic is blockchain. Is blockchain secure? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली 100% सिक्योर नहीं होती. हर टेक्नोलॉजी हैकेबल है. तो ब्लॉकचेन भी हैकेबल है, लेकिन बस इसको ब्रीच करना थोड़ा टफ है. एज हम देखते हैं कि नो फाइनेंशियल सिस्टम और डाटा प्लेटफॉर्म इज़ फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी इश्यूज़. कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम या डाटा प्लेटफॉर्म जो है ना, वो सिक्योरिटी इश्यूज से फ्री नहीं है. ब्लॉकचेन भी कोई एक्सेप्शन केस नहीं है. ब्लॉकचेन भी हैकेबल है. इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीच दैम. इसको बस बहुत मुश्किल है इसको ब्रीच करना. हम कुछ अटैक्स हैं जिनके थ्रू हम ब्लॉकचेन को क्या नाम है ब्रीच किया जा सकता है. जैसे कि 51% अटैक. 51% अटैक में क्या होता है कि अटैकर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ना 51% हिस्सा चाहिए, डाटा चाहिए टू ब्रीच द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब ये करता क्या है कि ब्लॉकचेन, एक तो 51% अटैक थोड़ा कॉस्टली है. इसमें ना उसको पावरफुल इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए, एसिक्स चाहिए, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे. एसिक्स करते क्या है कि वो ASICs माइनर है, इज़ अ कंप्यूटराइज डिवाइस दैट यूजेज ASICs फॉर द सोल पर्पस ऑफ माइनिंग. अब माइनिंग इन डिजिटल करेंसी. माइनिंग क्या है? माइनिंग है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को ना ब्लॉकचेन में इंटर करने के लिए हम माइनिंग यूज़ करते हैं. माइनिंग एक प्रोसेस है. माइनिंग इज़ अ प्रोसेस टू इंटर एनी ट्रांजैक्शन इनटू द ब्लॉकचेन. तो माइनर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ करके ना हम क्या नाम है ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस को इजी करते हैं. या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन करेंसीज को हम सर्कुलेशन में लॉन्च करते हैं. ऐसे ही दूसरा अटैक है साइबर अटैक. साइबर अटैक एक शर्ली मैनसन नाम की एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट थी. वो करती क्या थी, डिफरेंट फेसेस बनाती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस. साइबर अटैक भी उसी एक बुक लिखी थी 1973 में साइबर नाम से. उसके अंदर यही काम था कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक ही इंसान मुख्तलिफ चेहरों के साथ क्या नाम है अपना अटैक वारदात वगैरह करता था. साइबर अटैक भी बेसिक यही है कि एक ही इंसान का ब्लॉकचेन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अपना एक ही इंसान डिफरेंट फेसेस डिफरेंट अकाउंट से लॉग इन करता है. कि अकर्स व्हेन अ बैड एक्टर टारगेट द पीयर टू पीयर लेयर ऑफ द नेटवर्क. P2P नेटवर्क को जब टारगेट करता है कोई भी साइबर अटैकर,
वो कंट्रोल करना चाहता है, मल्टीपल नोड्स को कंट्रोल करता है। नेटवर्क से मल्टीपल नोड्स को कंट्रोल करने के लिए एक साइबर अटैकर डिफरेंट फेसेस के साथ, डिफरेंट अकाउंट्स के साथ P2P नेटवर्क में इंटर होता है। फिशिंग अटैक, दिस क्लासिक हैकर्स टैक्टिक वर्क्स विद ब्लॉकचेन एज वेल। फिशिंग ना इज़ अ स्कैम। फिशिंग से हम मेल्स वगैरह भेजते हैं, फिशिंग मेल्स होती हैं, हम प्रोफेशनल मेल्स के हम बना के, अटैकर्स प्रोफेशनल एक मेल बनाते हैं, हम जैसे लिंक पे जनरेट करते हैं, हमारा डाटा उनके पास चला जाता है। ऐसे ही डबल स्पेंडिंग भी है। डबल स्पेंडिंग इज़ अ रिस्क डाटा क्रिप्टो करेंसी can be used twice or more. Transaction information within blockchain can be altered if specific conditions are met. The conditions allow modified blocks to enter the blockchain. If this happens, the person who initiated the alteration can reclaim spent coins. डबल स्पेंडिंग बेसिकली क्या है कि हम अब आप देखा जाए ना, तो एक ही करेंसी को, मतलब कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, एक ही नोट को ना, एक ही करेंसी को 2 दफ़ा चलाना है, एक ही नोट को। अब हम 2 तरह होते हैं। अब फिज़िकल कैश है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेट 500 के रुपए हैं, हम कोई भी चीज़ लेने जाएंगे 500 की, हम चीज़ लेंगे, वो बकाया देंगे, हम वही 500 का नोट सेम उसी सीरियल नंबर्स के साथ दोबारा नहीं चला सकते जब एक दफ़ा हमने दुकानदार को दे दिया। लेकिन डिजिटल करेंसीज़ में हम ऐसा हुआ है कि एक ही डिजिटल करेंसी हमने दूसरी दफ़ा भी यूज़ की है। अब इनके एक रियल टाइम एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, 51% अटैक हुआ है। हैकर ने अटैक किया है 51% बिटकॉइन। उसने क्या नाम है 2018 में $18 मिलियन बिटकॉइन चोरी किए थे बाय यूजिंग 51% अटैक। ऐसे ही हमारे पास क्या नाम है फिशिंग अटैक का भी आया था। श्रीलैंड बैंक है बेल्जियम में ना, श्रीलैंक बैंक है, उसने उस पर फिशिंग अटैक हुआ था। एक प्रॉपर बिजनेस मेल जनरेट करके अटैकर ने भेजी थी, जिस पे हम बैंक के मैनेजर ने क्लिक करके अटैकर्स को क्या नाम है डाटा दिया, और अटैकर ने उसे $75 मिलियन चोरी किए थे। ऐसे ही क्या नाम है अटैकर्स ने $1.6 मिलियन भी क्या नाम है टोकन इथेरियम क्लासिक चेन्स के बलबूते पे डबल स्पेंडिंग के अंदर चोरी किए हैं। अब हमारे पास है टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है: प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। प्राइवेट नाम से ही है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन प्राइवेट है। प्राइवेट ब्लॉकचेन नाम से ही है कि इसमें क्या नाम है और एक ही सिंगल ही ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि सारा कुछ हैंडल करेगी। ठीक है, प्रॉपर ब्लॉकचेन डाटा एक सिंगल करेगा और कोई दूसरा नहीं आ सकता, सिंगल बंदा ही हैंडल आउट करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो प्राइवेट है। पब्लिक है कि हर कोई कर सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है। एग्जांपल्स हैं बिटकॉइंस है, इथेरियम में, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। कंसोर्टियम क्या है कि सेमी डिसेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड है बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग ग्रेटर स्केलेबिलिटी scalability and the privacy than public blockchains. It is used by multiple organizations then that work together. कि एक कंसोर्टियम में ना एक ग्रुप के साथ कंट्रोल्ड होता है। कंसोर्टियम करता क्या है, कंसोर्टियम एक परमिशनड टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है। ठीक है, कंसोर्टियम एंड प्राइवेट में है कि वन अथॉरिटी होती है हमारी। कंसोर्टियम में ग्रुप से क्या नाम है हैंडल आउट किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। हाइब्रिड जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है बाय वन अथॉरिटी विद सम परमिशन लेस प्रोसेसेस। कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। एलिमेंट्स है पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करके इस टेक्नोलॉजी को, इस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन को बनाया गया था। इट अलाउज कंट्रोल ओवर हु कैन पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन, making it suitable for a variety of use cases. It offers the flexibility of a private blockchain with the transparency of a public blockchain. बेसिक्स है कि जैसे हमें पता है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से आए और पब्लिक ब्लॉकचेन्स में क्या नाम है हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि कोई एक सेंटर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई एक हब नहीं है इनका, डिफरेंट लोग एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। तो दोनों को क्या नाम है परमिशन लेस प्रोसेस है हाइब्रिड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। अब है कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, द 6 पॉइंट ब्लॉक। सबको पता है ब्लॉकचेन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन के थ्रू हम क्या नाम है
बहुत सारे फील्ड्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, हम क्या नाम है उसके अंदर वोटिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. एज द इकोसिस्टम कंटिन्यूज टू डेवलप एंड मेच्योर, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी विल कंटिन्यू टू इवॉल्व इन टैंडम. वी कैन एंटिसिपेट, इन्हेंस कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स को ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के थ्रू. यूनाइटेड एफर्ट फॉर टेक कम्युनिटीज़ हो सकता है. गवर्नमेंट्स को हम टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से. अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड एंड इनोवेट इन पब्लिक thanks to shift towards decentralization. The future of blockchain is promising with continued development focused on scalability, interoperability, and enterprise adoption. Emerging trends such as NFTs and DOS. डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या नाम है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम कर सकते हैं. फिर हम नॉन फंजाइबल टोकन्स के थ्रू, यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर्स हैं, इनके थ्रू भी हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया जा सकता है. इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन है विद अदर टेक्नोलॉजीज इंडिकेट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर diverse and practical applications, while challenges such as scalability and regulation remain. The industry potential for innovation and growth remains high, making it an exciting space to watch. बेसिक ब्लॉकचेन क्या नाम है ना टेक्नोलॉजी. अब ब्लॉकचेन बेसिक करता क्या है कि ब्लॉकचेन का अगर हम देखा जाए ना, ये ब्लॉक्स हैं, ये हर एक डाटा को एक ब्लॉक में सेव करता है. वो ही डाटा जब अगले ब्लॉक में जाता है तो वो पीछे अपना एक शेडो छोड़ के जाता है. अब अगर मैंने अटैक्स आपको बताया 51% अटैक है, वो अटैकर करेगा क्या कि वो अपना एक अनब्रॉडकास्टेड ब्लॉक जो है ना, जैसे हम बता रहे हैं कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत हाई है. ब्लॉकचेन बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यही मेरा टॉपिक था. आई होप आप लोगों को समझ लगी हो. खुदा हाफिज़.